We're live. Right, welcome back to yet another episode of the Royals on the Road. Today marks the 47th episode, 3 shy of 50, 47th episode of this podcast. Back in the world of cricket, there's a lot that's happening, with India clinching yet another home test series victory and moving closer to yet another World Test Championship final, and the ongoing Women's IPL proving to be a superb entertainer. It's simply amazing if you're a cricket lover. However, if you're like one of us, if you're like a Royals fan, then it's doubly exciting. A scintillating performance from young Yashasvi Jaiswal, who's been at his very best throughout the series. It's compiled with yet another fifer for our dear Ashwin Anna. And finally, to top it all, Dhruv Jurel winning the man of the match as India's wicketkeeper batsman in the city that has given India its finest ever wicketkeeper batsman. It surely feels like we are in the Royals' heaven. Join us today as we discuss the Ranchi Test match and the sheer impact our Royals have created in that game, along with the other news that's surrounding the world of cricket. There's simply a lot on our plate to discuss. Joining us tonight, it's a Super Royal panel. We have Super Royals Nikunj, we have Super Royals Jaideep. Hey guys, how are you doing? All good, all good, Upan. So I'll just start. Coming from a personal point of view, as a Royals fan growing up, it was really difficult to see every franchisee have a fair share of players in the Indian national team, while we were usually left with either one or almost no spots. It would be either Yusuf Pathan in T20s or Munaf Patel in ODIs or later on Ajinkya Rahane in the test matches. For a while, it seemed like we were better off searching for representation in the English and the Australian national teams. However, in the last few years, our fortunes have changed. We've always prioritized on getting the best young talent, and while it has usually paid off for us in the IPL, now we are seeing that the Indian team is getting the same benefit. Nikunj, I'll start with you. How proud are you right now, to see so many Indian players from the Royal setup represent the men in blue and light up the stage whenever there's an opportunity? Upan, see, it's always pride to see Indian team performing well. But when you see a Royal playing and giving you performances like man of the match, man of the series, it's amazing. Like the changes we have seen after 22 auction has been amazing. Me, personally a fan from 2008, as you were mentioning, I have seen Munaf Patel, Neeraj Patel, Yusuf Pathan, Asnotkar playing the matches. We saw good young talent, always performing well, knocking the doors of Indian cricket team, but they were never there. And I don't think the management or base was there to make them an Indian players. But now the work which has been done behind Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, and the inclusion of experienced players like Ashwin, Trent, Bolt in the mix-up have enabled these young players to perform at Indian level also. So it's great moment. No words like seeing this young Dhruv Jurel who was bought at just 20 lakhs in 22 as a backup wicket keeper is now playing for India in test and performing like a great talent. So news is coming all around and praising the Rajasthan Royals is a proud moment. Indeed, it is. In fact, the IPL slogan is where talent meets opportunity, and we at Rajasthan Royals, we believe that we should provide the opportunities to the right hands to the youth. And speaking of opportunities, the list for the central contracts is out, and our boys in pink have surely outdone themselves. Ashwin, Jaiswal, Sanju, Prasid, and Avesh, there's 5 players from our setup who've made it this big. And while we do celebrate their achievement, our heart goes out to everyone's favorite Yuzi Chahal for not making it to the list. A champion performer like him knows how to make a comeback, and we as fans, we know that it's only a matter of time before he actually does, right? Jaideep, coming to you, what are your thoughts on the recently released contract list? Would you have liked to see any other changes? Very satisfied with the contract list that BCCI announced, especially first of all, I would like to say कि Sanju Samson का inclusion was a very moment of joy for me क्योंकि I'm a very big Sanju Samson fan and सबसे पहले मैं लिस्ट में उसी का नाम चेक किया A+ मुझे लगा कि नहीं होगा फिर A में चेक किया नहीं था वहां पर भी B में चेक किया वहां पर भी नहीं था बट मुझे पता था कि C में तो जरूर होने वाला है और C में संजू सैमसन का नाम देखा वहां पे और नाम देखे जिनमें से एक था यशस्वी जायसवाल का उस नाम से बहुत ज्यादा खुशी हुई उसके बाद नीचे लास्ट में बीसीसीआई ने रिट्वीट करके एक और पैरा ऐड किया हुआ था कि अगर आप 3 टेस्ट खेल लेते हैं
तो आपको डायरेक्टली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो शायद सरफराज खान को, ध्रुव जुरैल को, जो इंडियन टेस्ट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके 2 टेस्ट हुए हैं अभी तक, तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है अगर वो धर्मशाला टेस्ट खेल लेते हैं। तो आई वॉज वेरी वेरी आई वॉज इन एक्सटेसी कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरआर प्लेयर्स को मिले हैं, जो कि आपने बोला कि भाई इतने टाइम से हम वेट करते रहे कि हमारी रॉयल्स फैमिली का कोई प्लेयर इंडियन टीम के आसपास क्यों नहीं होता, हमारे प्लेयर्स इंडियन टीम को कंट्रीब्यूट करें, उनको मैचेस जिताएं और मैच विनिंग पारियां देखने को मिले, मैच विनिंग स्पेल्स देखने को मिले। इससे ज्यादा जॉय की बात एक फैन के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि नेशनल टीम्स कम्स अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को देख के, और काफी ऐसे भी नाम है, नॉट जस्ट द रॉयल प्लेयर्स, बट कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स ऐड हुए हैं इस लिस्ट में जिनका नाम देख के काफी खुशी हुई। तो ओवरऑल काफी अच्छी लिस्ट मैं कहूंगा जो बीसीसीआई ने अनाउंस की है, काफी सेटिस्फाइड इससे। So I would actually add something here, Upayan. Yeah, When go ahead. Jaidev was telling satisfied, I thought कि कुछ मतलब like you are odd one out जो satisfy हो रहा है, because इतना controversy चल रही है talking about Shreyas Iyer and Ishan Kishan. Being a Royal fan, I'm really satisfied कि हाँ हमारे players है. But when I talk about Shreyas Iyer and Ishan Kishan, things have come up in many directions and बहुत stories make up हो रही है कि श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया गया। ईशान किशन को मिड ऑफ द सीरीज में ध्रुव जुरेल की जगह शायद वो खेल एज अ विकेट कीपर खेलने वाले थे, बट ही रिजेक्टेड द ऑफर। सो आई थिंक रणजी भी नहीं खेले वो लोग, रणजी भी नहीं खेले वो लोग, नहीं खेला। यस, रणजी भी ऑप्ट आउट किया। सो दिस इज अ बोल्ड मूव बाय बीसीसीआई, आई वुड से। कुछ भी गलत किया है, दे हैव टेकन हार्श स्टेप्स, इवन मेकिंग यूजी चहल सिट आउट मे बी फॉर XYZ रीजंस, कोई तो रीजंस होंगे। सो आई थिंक देयर आर सम गुड पॉजिटिव स्टेप्स आर टेकन behind the walls by Rahul Dravid and company and maybe the management कि ऐसे प्लेयर्स को चांस दो। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट रोहित शर्मा थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस कि ऐसे प्लेयर्स को चांस दो जिनमें हंगर है और नेक्स्ट टीम बनाई जाए अभी। बिकॉज रोहित शर्मा के पास आई थिंक 1-2 साल है, उनके प्रेजेंस में, विराट कोहली के प्रेजेंस में अगर हम सही प्लेयर्स को हैंड ओवर करके जाए, दैट विल ईज द ट्रांजिशन फेज। I would also like to Upayan, I would also like to add my point, my view into this कि ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से इंडियन क्रिकेट टीम की जो आईसीसी मैचेस में, स्पेशली आईसीसी नॉकआउट्स में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमको रही है, तो एक तो हम नर्वस मोमेंट्स में, नर्वी मोमेंट्स में खेलना बिल्कुल भूल गए थे। तो शायद प्लेयर्स उस जो इवेंट, वो जो पर्टिकुलर नॉकआउट मैच है, उसको लाइटली ले रहे थे। उनको लगता था कि अगर मैं किसी प्लेयर पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा, बट मेरा व्यू मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये मैच हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास इतनी सैलरी है जो हमको आईपीएल से मिलेगी, हमारे पास इतना बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट है जो हमको हर साल बीसीसीआई देने वाला है। तो अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं तो फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ इंडियंस को फर्क पड़ता है कि आप ट्रॉफी लेके आए, आप देश का नाम रोशन करें। और वो फैक्टर कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो हार्श डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हो गए थे, और हार्श डिसीजंस लिए गए, काफी लेट लिए गए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, बट लिए गए। उसको देख के काफी खुशी मिली। बिल्कुल जयदीप, एंड it was a really touching way you said कि harsh decisions were needed, and it does affect 140 करोड़ की हवा में it really feels bad. I mean ठीक है, आप लोग कोशिश करो, मैच हारते हैं, मैच में हार जीत रहता ही है, बट अगर आप इसको कैजुअली लोगे जस्ट बिकॉज आपके पास एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है, देन it just devalues the kind of sentiment that is attached with the team. But like we talk about Shreyas Iyer, like we talk about Ishan Kishan, and surely enough, I'm sure that these are good players and they will definitely make a comeback. But there's also a bit of curiosity in the fact that Hardik Pandya is given an A contract.
I mean, he's been unavailable for a long time, and he's probably being considered as a vice captain option by the Indian national team for the limited overs setup. It's really interesting to see his position there, and at the same time, Rishabh Pant also has been given a B contract. I mean, uh, I don't know what the plans are for him with respect to the upcoming T20 World Cup or with respect to being a wicket-keeper batsman in general. Dhruv Jurel is doing pretty good in tests right now. It's just been two tests, but I'm sure that he'll grow from here. And KL Rahul has also done well. I don't really know whether it's actually been a positive sign to reward somebody who's not been playing a lot of cricket in the recent past with such a big contract as well. What are your thoughts on this, guys? Jaydeep, So आप start कर सकते हो. अच्छा, निकुंज yes. आप बोलो, हाँ, कोई नहीं. Okay. So if I start, I feel I trust Rahul Dravid and Rohit's thought process behind it. I'm pretty sure they are in touch with Hardik Pandya. It's really a mysterious case. Hardik Pandya getting this contract and continuing, and also we are not sure which type of injuries he's going through. Is he preparing well? Is he playing a domestic cricket? It's all behind the walls, and we don't know what's exactly going on. Hmm. But if these Correct. steps are taken for Ishan Kishan and Shreyas Iyer, particularly, I feel some proper communication would have passed to Hardik Pandya also. And I personally trust the management and selectors as of date. So I think something is there. And I hope Hardik Pandya proves us wrong that he performs well because India badly needs an all rounder, badly needs a finisher. We Hmm. have got someone like Rinku Singh in limited overs, but if Hardik Pandya plays to his potential, contributes with bat and ball, he's an asset. We all, being a cricket fan, know what he can do, but we all are disappointed equally seeing what he's like being on social media, but not playing to his ability. And then this IPL saga going on, change from team from Gujarat to Mumbai and things, controversial talks. So things are not going in Hardik's direction as of now, but I just hope best he can do is being the vice captain, get us this World Cup trophy. Nothing less. Hmm. Agreed. Agreed. Yep. I think sure enough. I mean, the discussion regarding the contracts that have been handed will keep going. But the most important point with which actually Jaydeep once mentioned right now was that BCCI did add a tweet wherein if Dhruv Jurel and Sarfaraz Khan they play the third Test match, they would be eligible for getting the contracts. How exciting is that? And especially with his recent performance, Dhruv Jurel. I mean, Rohit Sharma and Rahul Dravid would be really foolish to not include him. He's been kind of the find of the series for India, right? Uh, After Rishabh Pant, he seems like a natural successor, far more than what KS Bharat seemed to be capable of. In fact, former Royal and the English skipper Ben Stokes, he's recently said that Jurel's performance has earned him an admirer in the English cap. Apparently, Ben Fowkes has a man crush on him. So that's pretty exciting, I suppose. If you're just two tests sold and this is what you have already achieved. Guys, आप लोगों की क्या analysis है ध्रुव जुरेल पे? Because honestly, I can't just stop gushing over him. It's so exciting to see, another Royals player do so well. Do you really see him as a viable option in the future, not just in tests but across all formats? आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्म किया जो अभी उनको चांसेस मिले थे। ध्रुव जुरेल ने डेब्यू पे 47 मारा, फिर उसके बाद इंडिया मैच जीत गई तो उनकी बैटिंग आई नहीं उस टेस्ट में। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 90 स्कोर किया, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी उन्होंने और मैच को एंड तक लेके गए, मैच को फिनिश करके आए। तो ये एक डिटरमाइंड प्लेयर की पहचान है कि आप फील्ड पे अच्छा परफॉर्म करना जानते हैं, क्रीज पे खड़े रहना जानते हैं। और एक और एबिलिटी जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं वो ये है कि स्टंप के पीछे से आप प्लेयर्स को मोटिवेट करना भी जानते हैं। क्योंकि लगातार मैं टेस्ट मैच देखते हुए लगातार सुन रहा था, कम ऑन ऐश, कम ऑन जड्डू, कम ऑन कुलदीप। तो ये एक विकेट कीपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप विकेट के पीछे खड़े होते हैं। स्टंप माइक से पूरे देश को आवाज जानी चाहिए कि भाई हमने इन दो जनों को डरा के रखा है अच्छे से। तो वहां पे भी मैं ध्रुव जुरेल को अप्रिशिएट करना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स को एमएसडी का स्टेटमेंट याद दिला देता हूँ। जब एमएसडी ने क्रिकेट को अलविदा कहा था, कैप्टनसी को इनफैक्ट अलविदा कहा था,
तो काफी लोगों ने उनसे ट्विटर पे पूछा था कि सर अभी क्या जरूरत थी जाने की, अभी आप और कैप्टनसी कर सकते थे, आपका फॉर्म अच्छा था। तो उन्होंने कहा टेंशन मत करो, विकेट कीपर वाइस कैप्टन ही होता है। तो विकेट कीपर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक टीम को जिताने में, टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने में। तो बैट के अलावा उन्होंने स्टंप माइक से भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, इस स्किल को होपफुली इंप्रूव करेंगे ध्रुव जुरैल। बट एक चीज फॉर विच आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि वो सेना कंट्री में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि काफी इंडियन बैट्समैन जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडियन सॉइल पे, पर नहीं चल पाते हैं सेना कंट्रीज में। आई नो कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उस तरफ डिस्कशन को लेके जाना शायद थोड़ा सा इनजस्टिस हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मुझे लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करना है, ऑल फॉर्मेट्स में आपको अपना लोहा मनवाना है, तो आपको सेना कंट्रीज में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। विराट कोहली ने 2014 में जिस तरह से सेना कंट्री में परफॉर्मेंसेस दी थी, इन पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से लोगों ने उनका लोहा मान लिया कि भाई ये बंदा लॉन्ग टर्म जाएगा, अच्छा खेलेगा। केएल राहुल ने काफी सेंचुरीज लगाई सेना कंट्री में। वन ऑफ देम इज अभी केप टाउन टेस्ट में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई, इंग्लैंड में सेंचुरी लगाई। ऋषभ पंत इस मामले में काफी आगे रहे, उन्होंने सेना कंट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे कोई भी देश हो, आप मुश्किल समय पे आते हैं, मुश्किल कंडीशंस में खेलते, अच्छा परफॉर्म करके देते, तो वो काम अगर ध्रुव जुरैल कर पाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ध्रुव जुरैल को कोई भी इंसान टीम से बाहर कर पाएगा। क्योंकि बैट के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीपिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्टंप माइक वाले कंट्रीब्यूशन में भी एक नंबर है। तो फिर उनको कोई टीम से बाहर नहीं निकाल पाएगा। बट सेना कंट्रीज में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। निकुंज, आप So what do you say actually, about this? I liked what Jaideep said. It was very accurate talking about his performance behind the stumps, because I was observing throughout the match जिस वे में वो he was jumping in appeals, and जिस वे में कैच करने के बाद भी he was aesthetic and expressing, वो बहुत जरूरी है being a wicket keeper, because wicket keeper एक ऐसा एक सेंटर ऑफ पॉइंट पे खड़े हैं, वो पूरे ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे प्लेयर्स को पकड़ के रखते हैं, कैचिंग पोजीशंस में कम्युनिकेशन चल रहा है, कैप्टन के साथ नजर मिला है, बॉलर से डिस्कशंस हो रहे हैं। सो ही वाज वेरी एक्टिव एंड वेरी मतलब आई वाज ऑब्जर्विंग दैट पार्ट. सो नाइसली कवर्ड बाय जयदीप that yes, he was performing not only with bat, being a wicket keeper also he did really well. Good thing about Jurel is not I think is very much technically compact player. He can survive on सेना countries also, and वहाँ actually दुर्जुल की नीड हमको पड़ेगी, बिकॉज होता है हम लोग स्टार्टिंग में 3-4 विकेट लूज कर देते हैं न्यू बॉल से. तो ध्रुव जुरैल ऐसे प्लेयर है, एट नंबर 6 यू हैव ए टेक्निकली साउंड प्लेयर जो प्रॉपर बैट्समैन की तरह रन्स निकाल सकते हैं. नॉट लाइक इट्स हार्श, बट विद्यमान साहा भी एक ही वाज नॉट एबल टू गिव अस प्रॉपर रन्स ऑलवेज. वो मोर विकेट कीपर थे, लेस बैट्समैन थे. सेम आई थिंक ऋषभ पंत हैज हिज ओन वे ऑफ प्लेइंग. वो अटैकिंग शॉट्स क्विक 50 निकाल के देते थे, but there are situations where you need to play long innings, and I think that will be the moment where Dhruv Jurel will come and he will perform, and I just hope he gets chances in limited overs also. One more thing about Dhruv Jurel is मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अश्विन, ये लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे या ऑफलाइन ऑनलाइन काफी प्रेज करते हैं. they have their own group, I say, जो इंटरनेशनल ग्रुप कह सकते हैं एंड लीडरशिप ग्रुप कह सकते हैं. Similarly, I have started noticing there is a bond between Dhruv Jurel, Jaiswal, Rinku Singh, Surya Kumar Yadav, and means I have seen these players, and एक दो और जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, शुभम गिल, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड दिस शोज द नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जो एक नई हमको बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप दिख सकती है कमिंग ईयर्स में. उसका एक दिखता है कि हाँ, ये कुछ यंगस्टर्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक विराट, रोहित का भी एक बॉन्ड हुआ करता था, वैसे ये लोग भी फ्यूचर में एक न्यू स्टार्स बन रहे हैं. सो गुड दैट ध्रुव जुरैल इज अमंग्स देम, आइसोलेटेड नहीं है लाइक अदर प्लेयर्स. बिल्कुल. आई थिंक व्हाट also helps for Jurel to stand out is that उसका temperament भी कुछ ज़्यादा ही matured है. I mean, given his age.
in Rajasthan Royals, it's not easy to replace somebody like Riyan Parag because he's played for the Royals for so long. And yet Dhruv Jurel is somebody that we look up to now as an impact player because last में end में वही हमारे लिए matches finish करता है, वही हमारे लिए matches जिताया भी है last season को. So I think as Shubhankit Parekh has said, what's your views for Jurel in the T20 World Cup? I think he's work in progress, definitely. We are trying to build, of course, another finisher for the Indian cricket team. Let's just hope that the Indian cricket team does pick him. But at the same time, I think that it's too early. We don't want to rush him as well. But I think he should be there in consideration, of course. But before that, we do hope that if they are choosing any wicketkeeper batsman, it is Sanju Samson before anyone else, because he's been there. He deserves this even more. And आई थिंक टेम्परामेंट की बात करें तो एक सेल्फलेस टेम्परामेंट जो आपने बताया कि जायसवाल एंड Rinku Singh and Dhruv Jurel, they sort of praise each other. There's a spirit of team bonding in among them. I think that is something which also comes from the fact that Jaiswal and Jurel, they come from Rajasthan Royals, because we as a team we always promote this mentality that side before self, ki yaar team pehle, individual baad mein, and that is something which our captain also helps to demonstrate, and that is something which is needed as we look into the future. So that's something which is really exciting. I mean, it's a really exciting time if you're a cricket lover, if you're an Indian cricket lover, and most importantly, if you're a Royals fan. Moving on to the IPL, since we have almost gone there. I think the schedule is announced, and we do have the initial schedule ready for the Rajasthan Royals. I think out of the first 4 matches, we're playing probably 3 at home at the Sawai Mansingh Stadium, and I'm sure that we would be looking forward to everyone in Jaipur and beyond to come with their support. Hush hush, we might also get to see some tifos as well. I don't know whether I was supposed to say this out loud, but there's some plans going on, and you'll get to see if you follow us on our social media profiles as well. Moving on from men's cricket now, moving on to women's cricket, women's IPL. It has seen a wonderful start to this year's season so far. The top 4, in fact, is pretty competitive. It's evenly poised, and today as we speak, Harmanpreet's Mumbai Indians is taking on Smriti Mandhana's RCB tonight. So my question to you guys both, how much have you enjoyed this year's WPL, and what are your predictions for tonight? Because already, if I'm not wrong, RCB has lost Smriti Mandhana. Nothing new. Okay, they have lost 3 wickets, in fact. It's Elise Perry and Richa Ghosh who's batting with 38 for 3. That's pretty evenly poised, I'd say. Your thoughts, guys? So I would say Mumbai is playing like they play in IPL. So nothing changed in their playing style in women's also. They look very sharp. They look really strong team and a balanced team altogether. And I think they are strong contenders. I was personally supporting Gujarat Giants. I don't know, maybe the reason they started as an underdog, but it's not happening. They are not able to do well. They got some major injuries before the season started. But yes, shifting this to before IPL, and it has started. That season of T20 has started. It feels so every day we have started watching this WPL matches. So it becomes an habit, like हाँ भी IPL आ रहा है, वो माहौल आ रहा है, वो festival आ रहा है, and it's really good this change, and we are seeing more number of sponsors. In fact, the Chinnaswamy Stadium is full, totally full. What news we get, so it's great to see the progress which women are doing. और विमेन्स आईपीएल का एक्साइटमेंट निकुंज भाई होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो कि मतलब मैं तो इसमें बहुत स्पोर्ट्स में मतलब मेन विमेन स्पोर्ट्स थोड़ा सा शायद कंपटीशन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से विमेन्स क्रिकेट ग्रो हो रहा है, या कोई भी विमेन स्पोर्ट ले लो, आप फुटबॉल ले लो या इवन कबड्डी ले लो, कोई भी स्पोर्ट आप उठा के देख लो, जिस तरह से विमेन स्पोर्ट्स आज के दिन ग्रो हो रहे हैं, आई मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि आप जितना हो सके इंगेज कीजिए विमेन स्पोर्ट्स के साथ भी, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लोज कॉम्पिटिटिव मैचेस देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से अभी WPL अभी तक गया है, जिस तरह से मैंने मैचेस को ऑब्जर्व किया, पहले 2 मैचेस में तो आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे, तो इतने क्लोज मैचेस गए। और पहला मैच तो इनफैक्ट
लास्ट बॉल पे 6 लगकर फिनिश हुआ है। तो Yes. इस तरह का ये टूर्नामेंट जा रहा है, तो बिल्कुल एंगेज होना चाहिए फैंस को WPL के साथ भी। रॉयल्स की अभी तक नहीं है फ्रेंचाइजी यहाँ पर, बट हु नोज, मे बी इन फ्यूचर वेरी सून रॉयल्स भी यहाँ पर हमको खेलते हुए दिखे, राजस्थान रॉयल्स। तो उसका हमको राजस्थान इंतजार रॉयल्स नहीं है, रहेगा। बट बारबाडोस रॉयल्स का तो टीम है वुमेन्स क्रिकेट में, तो बारबाडोस रॉयल्स आई का वुड विमेन्स एनकरेज टीम आवर है, फैंस टू आल्सो फॉलो और दैट एज वेल। इवन इवन WCPL इस सीजन का हमारी बारबाडोस रॉयल्स विमेन्स टीम ने ही जीता है। तो काफी एग्जैक्टली। अच्छा है विमेन्स स्पोर्ट, और बहुत कंपटीशन तो अब काफी ऊपर जा चुका है स्पोर्ट में भी। तो सपोर्ट कीजिए आप सब, और पूरे दिल जान से सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, there's talent, there's opportunities, there's infrastructure, and all we need now is support, support for every kind of sport, and support for every kind of gender who plays the sport. It's simply an amazing time, actually. Moving on to across the hemispheres, shayad, there's a lot of cricketing action happening there. I think New Zealand have a very interesting fourth day target set for them in the test match that they're playing against their Trans Tasman rival, Australia. They find themselves in a chase for 258 runs. It's been a very interesting match, actually. For Australia, Cameron Green, he's done really well, and he's also somebody who's one to look out for in the future. MI fans, if there's anybody who's listening in this podcast, they would be really hoping for him to turn up this year. But one thing that does trouble me, because we in Rajasthan Royals fan base, we have a significant number of Steve Smith fans. He hasn't really had the best of his opportunity. He hasn't really made the best of his opportunities as a test opener in the recent past, right? There's been another failure from Steve Smith. It's a rare thing, Steve Smith failing in test matches, but Steve Smith failing as a test opener yet again. Is this the end of the road for him as a test opener? Like, should he go back to number 4? He's a selfless cricketer, we know that, but I think he's not been able to make the most of it. Or would the Australian cricket team give him more time in this role? क्या लगता है आप लोगों को? See, I personally feel that he is a better player at number 3, number 4. But he himself likes to promote himself as a opener. I also remember him playing as a opener for Rajasthan Royals when he was a 2020। captain. So he used to take his responsibility. He used to like and take the charge up front. But the way he plays, his batting style, technique suits that he comes after a wicket or two, because new ball is always swinging, and it's tough with the batting technique like Steven Smith has. There's a lot of chance that he can lose wicket, but again, he is one of the part of Fab Four, and who we are to comment on his technique. So with that batting stance and everything, he has scored thousands of runs. So definitely, he is someone who will come back. Big innings is on the verge of coming. Whatever position he plays, he will perform. But yes, opening wise, is not doing well lately, and this is the time that he should relook. And at last phase of his career, he can come back to a position which was suited most to him. कंप्लीटली एग्रीड यार निकुंज भाई, क्योंकि आप देखो कि स्टीव स्मिथ के इतने नंबर्स हैं, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलिया को, चाहे जिस भी फॉर्मेट में वो खेले हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, इवन IPL फ्रेंचाइजीज के लिए, खासकर हमारे लिए। तो टेक्निक पे तो सवाल उठाया जा नहीं सकता, पर स्टीव स्मिथ का जो करंट जो स्कोर्स हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इसके पीछे मैं जिम्मेदार मानूंगा उनके फॉर्म को। और मुझे लगता है कि ये फॉर्म का डिप है जो नेचुरली हर क्रिकेटर के करियर में हमको देखने को मिलता है। फॉर्म का डिप हमको किसके साथ नहीं देखने को मिला? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के फॉर्म में डिप आ चुका है, विराट कोहली के फॉर्म में डिप हमने देखा है, और बाद में फॉर्म में वापस आने के बाद जबरदस्त नॉक्स भी देखे हैं, जिन्होंने एक बार वापस से उनके साथ जो टैग्स लगते हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ मास्टर ब्लास्टर का टैग लगता है, विराट कोहली के साथ किंग का टैग लगता है, तो उन टैग्स को उन्होंने दोबारा से प्रूव करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्म का डिप है, और थोड़े टाइम बाद, आज नहीं तो कल, उनका फॉर्म वापस उनके साथ होगा, तब वो वापस हमको रन्स बनाते हुए दिखेंगे। बट थोड़ा सा आगे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए,
मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज शेड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर में, तो वहां एज एन इंडियन फैन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा रन बनाए, क्योंकि लगातार तीसरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना चाह रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। तो वहां पर हम चाहेंगे कि स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा रन ना बनाए, बट स्टीव स्मिथ को अमंग्स द रन्स दोबारा देखने की मुझे भी बहुत इच्छा है। जल्द से जल्द वो फॉर्म में आए, जल्द से जल्द वापस टॉप नॉच इनिंग्स उनकी हमको देखने को मिले, ऐसी मेरी उम्मीद भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। जी बिल्कुल, और अपना सुपर रॉयल मिहिर जैन का भी वही मानना है कि 200 फॉर स्मिथ व्हेन एक्चुअली he's a Steve Smith fan, and I think in the Fab Four in the recent past, at least in this year at least, performances have been kind of dipped down. Kane Williamson too hasn't been among the runs. We've seen Joe Root struggle as well. In the last match he got a century, but that was after a long time. विराट कोहली तो फिलहाल चलो अभी खेल नहीं रहे हैं. ऑल्सो शाउट आउट टू आके कोहली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस विराट कोहली फॉर बीइंग अनदर फादर येट अगेन. आई थिंक ये उनका दूसरा औलाद है हारिस रॉफ के बाद शायद, बट कोई नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Moving on to yet another Australian superstar, Pat Cummins. There was this comment from Ritwik, Super Royal Ritwik, that there's been a bit of rumors about Pat Cummins going to lead Sunrisers Hyderabad in IPL 2024. I think there are two ways of looking at it. Aiden Markram has actually won the South African T20 League with Sunrisers in I think they have the Johannesburg franchise. Yeah. Yes. So, Eastern Cape. Sorry? Eastern Cape. Sunrisers Eastern Cape. Yeah, Eastern Cape. Yeah, Johannesburg is CSK, I guess. So I think they probably trust him a bit more there. Of course, the South African T20 League is much different from the Indian T20 League, but I think they probably would go with the theory that if it's not too broken, maybe don't try to fix it or something. But I think when you have a World Cup winning captain at your at your ranks, especially somebody like a Patrick Cummins, who's probably one of the hottest property in world cricket right now, it just probably would be tempting to go ahead with Pat Cummins as well. They actually have 8 brilliant foreign players in their ranks. Guys, what do you think? Pat Cummins as a captain, should they change him only for Sunrisers Hyderabad, or would they keep him with keep Aiden Markram on the basis of his performance with the Eastern Cape team? Yeah, I personally think कि सनराइजर्स हैदराबाद को वही वाला प्रॉब्लम हो जाएगा जो राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ करता था अगर वो एडन मार्करम के साथ कंटिन्यू करते हैं. क्योंकि इफ यू हैव अ लुक एट देयर ओवरसीज स्ट्रेंथ, उनके पास मार्को येंसन भी है, पैट कमिंस भी है, ट्रेविस हेड भी है, ग्लेन फिलिप्स भी है, हेनरिक क्लासन भी है. मतलब उनकी टीम ज्यादातर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस डिमांड कर रही है वो उन 4 ओवरसीज प्लेयर से डिमांड कर रही है जिनको उन्होंने बहुत बड़े बक्स में खरीदा है. तो वहां मुझे लगता है कि अगर वो एडन मार्करम को खिलाते हैं, थोड़ा सा मेरा ओपिनियन है कि शायद वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है T20 क्रिकेट में जितने कि उनके दूसरे प्लेयर्स हैं. पर अगर एडन मार्करम कैप्टन रहते हैं तो उनको कंपल्सरीली आपको खिलाना पड़ेगा. पैट कमिंस भी आपको एक तरह से हम यही मान के चलते हैं कि आप उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास खाली 2 ओवरसीज स्लॉट्स बच जाते हैं. उसमें से भी एडन मार्करम कैसा परफॉर्म करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले साल का आईपीएल उनका कोई बहुत खास रहा नहीं था. ऐसे 20 में भी उन्होंने टीम को लीड तो अच्छे से किया, बट रन्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि शायद उन टॉप नॉच प्लेयर्स में आ रहे थे वो जो ईस्टर्न केप एक्सपेक्ट कर रही थी. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है. लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेगा एसआरएच, क्योंकि पैट कमिंस शायद अगले साल अवेलेबल ना हो. एशेज हैं अगले साल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो शायद वो कंट्री को एक बार फिर से प्रायोरिटी दे. पर इस सीजन के लिए कुछ कमाल देखने को मिल सकता है हमको, क्योंकि एक पैट कमिंस को छोड़ दे बाकी आपके पास 3 ओवरसीज स्लॉट्स बचते हैं जहां पे आप ट्रेविस हेड को ट्राई कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, इवन आपके पास मार्को येंसन है. तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर एडन मार्करम कैप्टन नहीं होते तो. बट अगेन ये एसआरएच का डिसीजन होने वाला है कि वो किस तरह से चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि
एक लॉयल्टी वाली बात भी, उसको भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन जिसने एक ऐसी फ्रेंचाइजी को 2 लगातार कप्स जिता के दिए, जिन्होंने सालों से कोई भी टाइटल जीता नहीं था। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी देखनी कि एडन मार्करम के साथ कंटिन्यू किया जाता है या पैट कमिंस के साथ। सो इवन इवन आई फील एसआरएच क्या कर रही है, जो बेस्ट ऑप्शन है उनके पास, पैट कमिंग्स, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उनको कैप्टन बना दिया, दिस इज व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, and they're trying their luck out. See, Pat Cummins is amazing captain, but he had a great Australian team with him. SRH का प्रॉब्लम क्या है? Plenty of foreign players, but खिला सकते हैं सिर्फ 4. इनफैक्ट मैं तो पैट कमिंग्स को भी कभी कभी 4 में से नहीं खिलाऊं, बिकॉज ही इज नॉट बीन कंसिस्टेंट इन आईपीएल, इफ यू विल सी हिज करियर. सो एक कंपल्शन हो जाएगा, पैट कमिंस को खिलाना पड़ेगा. बट अगेन सेम इज द केस विद एडन मार्कन. सो एसआरएच की टीम में बैलेंस की कमी है विद टर्म्स ऑफ इंडियन प्लेयर्स. सो कैप्टन किसको भी बनाए, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल. बट आई थिंक दिस इज द राइट वे कि लेट पैट कमिंग्स कम विथ हिज ऑल द लक इन इंडियन कंट्री. क्या पता कि वो एसआरएच कुछ एक डार्क हॉर्स की तरह आईपीएल में फिनिश कर ले एट द टॉप. यू नेवर नो. I would like to add one thing in this, Nikunj bhai. Actually, this is the choice of choosing the better. क्योंकि शायद दोनों ही उतने अच्छे प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि है T20 के हिसाब से. क्योंकि आप जब T20 क्रिकेट देखते हैं, स्पेशली आईपीएल जब आप देखते हैं, आप टीम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक इंडियन प्लेयर खिलाएं ताकि आपको 4 बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स खिलाने की जगह मिल जाए. जब डेविड वार्नर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एसआरएच को लगा वो लाइबिलिटी है और उनको निकाल के उन्होंने ऑक्शन पूल में डाल दिया. और बाद में कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनके पास उस समय 3 ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल थे. क्योंकि आप देखें कि डेविड वार्नर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अलावा 3 ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल थे, तो वहां पर एक स्लॉट उनका वेस्ट हो रहा था. और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली उनको ओवरसीज कैप्टन के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कैप्टन में इंडियन प्लेयर्स जो उनके पास है, उनके पास शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो इट बिकम्स द चॉइस ऑफ बेटर कि जो बेटर है उसके साथ जाए. बिल्कुल. एंड आई थिंक पैट कमिंस विल probably be a significant part in the SRH setup, because when you buy a player for 20 crores, you probably can't just put him away. And of course they would want him to play all 14 matches, but again, given his recent form in the IPL, at least he goes for a lot of runs, but he's also a very handy lower order batsman. Exactly as Surinder points out, in shorter format of white ball cricket, he's not that good as much as he's in the red ball format, especially with the ball. So I don't know what exactly would be in the minds of the SRH think tank. I think they would also be missing out on having Dale Steyn this year. Recently news mein aaya tha. So it would be interesting to see what Brian Lara and company can do. But फिलहाल के लिए let's move on to choosing the playing 11 for our own team. Sudarshan Maheshwari has already put out his choice of players to represent the men in pink. Butler and Jaiswal, of course, is a no-brainer now, especially now that Devdutt Padikkal is not a part of the squad. So I don't think there is any issue there. Samson, Parag, and Hetmeyer, that probably seems like how it would go. I'm also interested to see how Rajasthan Royals ends up using Shubham Dubey. I think he is probably a backup for a finisher. In this case, probably Parag, or if Powell doesn't really, if Rovman Powell doesn't really fit in the squad at some point, maybe Shubham Dubey plays in. If you are really looking forward to bring in another foreign player as well, Ashwin, Chahal, Bolt, and I think either of Avesh and Prasid. We have a lot of fast bowlers, honestly, so it's actually a good headache for the selectors to have. Up to you guys. Who do you want to go ahead with? प्लेइंग 11 काफी हद तक ओपन आई फील की बनी हुई है राजस्थान रॉयल्स की. सुदर्शन ने भी जो प्लेइंग 11 मेंशन की है, ऑलमोस्ट मेरी भी वही प्लेइंग 11 रहने वाली, क्योंकि आप देखिए कि 2022 के ऑप्शन में हमने एक टीम बना ली थी. हम कहते हैं ना कि कोर बना लिया, होना बहुत जरूरी है आईपीएल फ्रेंचाइजीज के केस में, मेगा ऑप्शन में. तो वो कोर बना लिया और उस कोर को हम रिटेन करते गए आने वाले सालों में. 2023 के लिए हमने रिटेन किया,
2024 के लिए रिटेन किया, और कुछ एक जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो काफी हद तक सारे आरआर फैंस का प्लेइंग 11 सेम ही रहने वाला है। मेरा पर्टिकुलरली मेरा प्लेइंग 11 के बारे में मैं बात करूं तो वो भी यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के साथ ही शुरू होने वाला है। उसके बाद आपको संजू सैमसन नजर आएंगे, देवदत्त पडिक्कल इस साल नहीं है, तो हम लोग रियान पराग को उनका फेवरेट 4 नंबर स्पॉट देना चाहेंगे, जिस स्पॉट पे उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे रन बनाए। इवन नॉट इवन रणजी ट्रॉफी बट विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट आज के दिन बीसीसीआई करा रही है, रियान पराग का नाम हमको वहां देखने को मिलता है, पर नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर खेलने का मौका इस साल मिलेगा रियान पराग को फाइनली, तो होपफुली वो अच्छा करेंगे। संजू सैमसन को भी 3 नंबर पर उनका जो फेवरेट पोजीशन है वो भी बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से लास्ट 2 सीजन्स में। तो इस साल संजू सैमसन को भी उनका फेवरेट तीसरे नंबर का पोजीशन मिलेगा, जिस पोजीशन पर खेलते हुए उन्होंने रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक शानदार सेंचुरी भी लगाई है। तो होपफुली एक्सपेक्टिंग सम ऑफ दो सेंचुरीज फॉर राजस्थान रॉयल्स इज वेल। 5 नंबर पे शिमरन हेटमायर, 6 नंबर पे रोहमन पॉवल, 7 नंबर पे रविचंद्रन अश्विन, 8 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट, 9 नंबर पे युजवेंद्र चहल, 10 नंबर पे प्रसिद्ध कृष्णा और 11 नंबर पर आवेश खान। इम्पैक्ट प्लेयर्स मेरे होने वाले हैं, अगर बॉलिंग पहले है तो इम्पैक्ट प्लेयर आपको ध्रुव जुरेल नजर आएंगे वहां पर, क्योंकि बैटिंग को एक्सटेंशन मिलने वाला है उससे। और अगर आपके बैटिंग पहले है तो वहां पर आपको 3 बॉलर्स में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि संदीप शर्मा हो सकते हैं, नवदीप सैनी हो सकते हैं, कुलदीप सैन हो सकते हैं। अगर फास्ट बाउंसी पिचेस हैं तो आपको नवदीप सैनी या कुलदीप सैन में से कोई एक नजर आ सकता है। अगर स्विंगिंग कंडीशन है, संदीप शर्मा नजर आ सकते हैं। और एक और ऑप्शन राजस्थान रॉयल्स के पास ये भी है कि वो 3 ओवरसीज के साथ जाए, ना कि 4 ओवरसीज के साथ। तो अगर स्पिन कंडीशन है तो आप वहां पर एडम जैम्पा को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल, बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट सीजन में। तो इस तरह से मेरी प्लेइंग 11 है। Actually, it's a really compact 11, and looking forward to witness them playing in the Sawai Mansingh Stadium. I think everyone is just waiting for Jaiswal and Josh Butler to come together and start the party for us. Nikunj, would you have the same 11? So my playing 11 will stay same, sort of what Jaideep was saying, but what I will do is I will keep all the players which we had in 23. So my playing 11 will start with Josh Butler, Jaiswal, then Sanju Samson, Riyan Parag at 4. Let's promote him at 4 this year and give him a freedom to perform well. No tensions. We have good finishers this time around. Go perform at 4. At 5, you got Shimran Hetmire. Now at 6, the way Dhruv Jurel is playing, I won't keep him as an impact player anymore. I will keep him as a batsman, proper batsman at 6. Now at 7 you have Ashwin, at 8 Chahal, then you got three fast bowlers, Bolt, Prasidh, and Avesh Khan. Now when I talk about impact player, this opens us, if we are lacking in runs, we can bring in someone like Powell, Donovan Ferreira, even Tom Cadmore. We never know like what kind of batsman we need at what position. So this will open our all overseas good bench strength. And also, like Jaideep said, Adam Zampa. Now I'm not sure how SMS pitch will behave this time around. I hope we get high scoring runs. But again, if it's a turner and slow pitch, then Zampa can come in easily. But I don't want Zampa to be part of playing 11. He should come as an impact player. So let's use that trump. That's the only RR is the only team which can go ahead strongly with only 3 overseas with a good balanced 11 players team, and then ask any impact player to fill in and come up. So this should be the strategy with RR should use. Absolutely, and I think, yeah, I mean, with Dhruv Jurel coming in so well, I think for this year, I do believe that शायद impact player में उनको ना देखने को मिले. Maybe he'll be a part of the playing 11. Uh, Yes. in fact, it's going to be a headache for RR owners in the next auction as well. I mean, who to retain? There's just 3 spots, and
who knows, maybe we might end up retaining 3 wicketkeeper batsmen, or Yashasvi Jaiswal bhi kafi अच्छे form mein hai. It's not a question I want to answer, definitely not, but Jake Makram, good luck with you. I think we are almost moving to the end of our discussion. I'll just go ahead with with the test match that's in hand for in the Indian cricket team in Dharmasala. You know, last match is series ka, and it's been a wonderful series. When we started, there was a lot of there was a lot of questions. Ki, there's no Virat Kohli, right? And that does have an impact. Mentally, that gives England a better chance as well. But I think we've answered a lot of questions. We've found a lot of impactful players in young Turks like Jurel and like Sarfraz. Yeswal has come so well. Guys, what are your expectations on the Indian cricket team as far as the last Test match is concerned? Do you think there will be any changes in the first 11? Would somebody like a Devdutt Patikal get in, or do you think somebody like maybe there would be any changes in in the bowling lineup, for example? Because we've seen that Dharmsala mein the pitch, it does have that kind of turn. Do you think maybe Jasprit Bumrah will be kept rested, and young Turk Akashdeep, he's also had a very good debut last match. Or do you think Indian team will persist with him? What are your thoughts? I personally think कि this will be the first time कि हमको 3 पेसर्स एक टीम में नजर आने वाले हैं इस टेस्ट में. एंड आई थिंक कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप होने वाले हैं वो 3 पेसर्स टीम इंडिया के लिए. क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि धर्मशाला में आपको उस तरह के कंडीशंस देखने को मिलते नहीं है जो बाकी के इंडिया में आपको देखने को मिले, बाकी की टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिले. स्पिन कंडीशंस, बॉल थोड़ा नीचे रहता है, ज्यादा बाउंस करता नहीं है, पिच स्लो खेलती है, मुश्किल कंडीशंस. मुश्किल तो खैर धर्मशाला में भी रहने वाले हैं, पर काफी अलग, बाकी के इंडिया से काफी अलग. तो मुझे लगता है कि इंडिया फाइनली वो टेस्ट इस सीरीज का खेलने वाली है जहां पर आपको 3 पेसर्स के साथ जाना पड़ेगा. द 2 स्पिनर्स वुड बी ऑब्वियसली बी रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन. और बैटिंग में डेफिनेटली एक चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रजत पाटीदार को एक बार ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को टीम में लाया जाए, क्योंकि 2 टेस्ट से देवदत्त पडिक्कल भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं. और रजत पाटीदार को इनफैक्ट जो मौके मिले हैं उन्होंने उसको सही तरह से भुनाया नहीं. तो ये बहुत बड़ा मौका होगा देवदत्त पडिक्कल के लिए भी अगर उनको चांस दिया जाता है तो, कि वो किस तरह से परफॉर्म करते. और एक ट्रांजिशनल फेज हमको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिला उपायन, जैसा आपने मेंशन किया कि काफी सारे हमको नए प्लेयर्स हमको देखने को मिले, जैसे कि विराट कोहली आपने बताया कि नहीं था तो उनकी जगह खाली थी. उनकी जगह पे आपको रजत पाटीदार उनकी पोजीशन पर खेलते हुए नजर आए. सरफराज को मौका दिया गया, सरफराज ने पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, होपफुली आने वाले टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. आपके पास केएस भरत का एक्सपीरियंस नहीं था, पर ध्रुव जुरेल ने आके बहुत अच्छे से अपनी जगह बैठाई, टीम में रन्स भी बनाए, विकेट के पीछे से भी अच्छा काम किया और स्टंप माइक पे भी अच्छा काम किया. तो एक ट्रांजिशनल फेज हमको देखने को मिला. बट एक चीज और हमको देखने को मिली कि टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आप बिल्कुल भी कम मत आकिए, क्योंकि ये प्लेयर्स चाहे इंडियन टीम में अभी खेल रहे हो, पर इंडियन टीम से पहले ये इंडिया ए खेल चुके हैं, बहुत टफ रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल चुके हैं, और उसके अलावा काफी सारे रेड बॉल टूर्नामेंट्स जो बीसीसीआई हर साल कंडक्ट कराती है वो सारे टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं. तो इन प्लेयर्स में एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, पर टैलेंट की और स्किल्स की कमी नहीं है. तो इंग्लैंड ने शायद इनको कम समझने की गलती कर दी जो इंग्लैंड के ऊपर बहुत भारी पड़ गया. मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्लेयर्स का पूल है ये काफी हद तक क्रिकेट को अपने साथ लेके आए. क्रिकेट का पूरा जो आपको सीनियर लेवल पे स्किल सेट चाहिए होता है वो अपने साथ लेके आए. तो वो चीज मुझे देख के काफी अच्छी लगी. विराट कोहली की इन्होंने कमी खलने नहीं दी, और मेरी उम्मीद पूरी यही है कि आने वाले टेस्ट में भी ये विराट कोहली की या और भी कोई सीनियर प्लेयर रेस्ट लेता है तो उसकी कमी खलने देंगे. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक एक और प्लेयर जिसको एक शाउट आउट तो मिलनी ही चाहिए, वो है कि शुभमन गिल. How he has stepped up in the number 3 position. It's a very tricky position actually.
जिस पे he has done so well, and most importantly he's done well in the second innings as well. It's really interesting because usually we've seen that जब fourth innings में बारी आती है, and India usually falter because no individual batsman kind of steps up, no matter how well they've done in the initial innings. But Shubman Gill has done well. He's taken us home in the last Test match along with Dhruv Jurel. Nikunj, what are your thoughts about him cementing the number three position? Do you see him as a number three player, or would you want to see him come down the order when Virat Kohli retires at probably at number four? Maybe somebody else gets it at number three. What are your thoughts? Frankly, he was struggling. He was lately really struggling to play at number three, and his playing style was also out of comfort. What I was listening from commentators was कि शुभम गिल अपने comfort zone में नहीं खेल रहे हैं. तो लास्ट इनिंग्स भी जो खेली थी, he was not so comfortable, but उसको ग्राइंड कर करके स्टेबिलिटी लाके हार्ड वर्क करके जो फ्लुएंट गिल की इनिंग्स नहीं थी, लेकिन दैट वाज सम हार्ड वर्क एंड दैट वाज मच नीडेड फ्रॉम हिम इन टेस्ट क्रिकेट. उन्होंने काफी अच्छे रन्स बनाए लिमिटेड क्रिकेट में, बट टेस्ट में बहुत जरूरी था ऐसे इनिंग्स खेलना, which he did, and he did really well. But I still feel Virat Kohli should come at 3 and he will come down at 4. He is still work in progress kind of player. थोड़ा टेक्निक और कुछ और भी थोड़ा मे बी एक कैजुअल अप्रोच रहता है कभी कभी बैटिंग के तरफ. सो it will take time, but yeah, he is a player which will be there for long time now for India. Absolutely. Super Royal Rohit Gehani, he has an interesting thing to say that ये टेस्ट सीरीज तो आरआर वाली रही है अब तक, and quite really, I mean, the most significant part of this test series for me was young Yashasvi Jaiswal stepping out and hitting 3 consecutive sixes to James Anderson. Yes. I mean, those shots were a stamp of authority, and those simply showed that where our Indian talent have come forward to. Hitting a 42-year-old bowler who's probably the best right now, not just at his age or not just in the current generation, but maybe throughout. I think that takes a lot of courage, that takes a lot of talent, and that is something which we have. But if you were an English fan right now, because the World Test Championship is still at stake. Maybe you have lost the series, but fifth Test May you can still get some points for the World Test Championship. And baseball clearly hasn't worked out in these pitches. This is the first Test series that the baseball team has lost. So, अगर आप English side में होते, and if you had to give a piece of information, what would you give possibly? This is very difficult to answer क्योंकि इंडियन टीम से आगे बढ़ के कभी सोचा ही नहीं, राजस्थान रॉयल से आगे बढ़ के कभी सोचा ही नहीं. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर इंग्लैंड राइट नाउ, क्योंकि आईसीसी शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे मूव ऑन कर गई, बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे मूव ऑन कर पाई है. उनका कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां टेस्ट सीरीज जीतिए, एशेज को अपने नाम कीजिए, आप इंडिया जाइए, पटौदी ट्रॉफी को अपने नाम कीजिए, आप न्यूजीलैंड जाइए, आप वेस्ट इंडीज जाइए, आप वहां सीरीज जीतिए. उसके लिए चाहे आपको स्लो ओवर रेट का मुआवजा भुगतना पड़े, क्योंकि हमने देखा है कि ये तीसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है और सबसे ज्यादा स्लो ओवर रेट के पॉइंट्स किसी टीम के डॉक हुए होते हैं तो वो होती है इंग्लैंड. तो वहां पर इंग्लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है. इंग्लैंड बहुत सारे मैचेस ड्रॉ कराती है सीरीज जीतने के लिए. बैसबॉल के आने के बाद हमको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एशेज में भी हालांकि ड्रॉ कम हुए, बट एक जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 टेस्ट मैच जीते, क्योंकि इंग्लैंड अपनी अप्रोच नहीं बदलना चाहता किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पर उनको सीरीज ड्रॉ देखने को मिली. तो इंग्लैंड अभी भी सीरीज जीतने वाली मेंटालिटी के साथ में है, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उनको स्लो ओवर रेट्स के पॉइंट्स डॉक करवाने पड़े. उनके स्लो ओवर रेट के काफी सारे पॉइंट्स डॉक हुए, चाहे उनको कुछ मैचेस ड्रॉ कराने पड़े इसके लिए, या फिर उनको बहुत जल्दी खेलकर मैचेस जीतने पड़े. इंग्लैंड अभी भी टेस्ट सीरीज जीतना चाहता है, ना कि इन मैचेस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स लीग मैचेस की तरह इंग्लैंड देख रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव से इंग्लैंड खेलेगा तो शायद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर अच्छे रैंक पर भी आपको नजर आएगा,
उसके लिए उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि बैस बॉल मतलब सिंपली बैशिंग द बॉल। आप जब भी बॉल को देखें, आप बॉल को मारना शुरू कर दे, तो टेस्ट क्रिकेट इस अप्रोच पे नहीं चला है। 200 सालों से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, और इस अप्रोच के साथ टेस्ट क्रिकेट ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, बट वही प्लेयर्स आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बैटिंग में चेंजेस लाके भी दिखाते थे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यशस्वी जायसवाल की जो रिसेंट इनिंग्स थी, काफी चलाया, बॉलर्स को काफी मारा, बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई, पर जब मुश्किल सिचुएशन थी तो बॉल को डिफेंड भी किया, बॉल को रोका भी है। ध्रुव जुरेल का भी मैच के अंतिम समय में काफी स्ट्राइक रेट अच्छा था, बट उसके अलावा जब मुश्किल सिचुएशन थी तब उन्होंने टिक के खेला, रन बनाने की कोशिश की। पर इंग्लैंड ऐसा करता नहीं। इंग्लैंड चाहता है कि हम हर सिचुएशन में बेसबॉल खेलें, रन रेट 6, 6.5, 7 की हम मेंटेन करके चले। तो टेस्ट क्रिकेट आपको अलाउ करता नहीं, और जब तक आप इन बेसिक्स से, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट खेल के आप ऑब्वियसली अपोजिशन को बैकफुट पे लाके खड़ा करते तो है ही। ये हमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से सीखा है ओवर द इयर्स की वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और अपोजिशन को बैकफुट पर ले आते हैं। पर आप सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना सीखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बॉलर्स का इतना कंट्रोल नहीं है, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, उनको बैकफुट पर लाइए, 6 की जगह 8 की रन रेट से खेलिए। बट जब सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तब आपको 2, 1.5 या 1 की रन रेट से भी खेलना पड़ेगा, तभी आप मैचेस जीत पाएंगे। और मैचेस जब आप जीतेंगे, तभी आप WTC पॉइंट्स टेबल पर अच्छे रैंक पे नजर आए। जी बिल्कुल। और आई थिंक we'll just take the last question. Surinder Singh, he's mentioned that did RR miss a chance of going with Tom instead of going with Stephen Rutherford? I think he's probably saying this on the basis of what Rutherford has done for the in the recent PSL match for Quetta Gladiators. I think he's done a really great job there. But I think एक प्रॉब्लम जो अपना हमेशा से था इन गोइंग इनटू दिस ऑक्शन वाज बजट ज्यादा नहीं था, especially after spending 7 crores on Rovman Powell and 5 crores on Shubham Dubey. I don't really think we had enough budget to go ahead for exclusive players, and we probably went with whatever we could go with, the best that we could get at that point. To try went with some proven players in general in the Royal setup as well. Guys, you have any other opinions on this? Because I honestly think that it's done, is what it's done. Can't really change much. But yeah, I mean, Stephen Rutherford, he's doing really well at this point. Yeah. I feel we bought Tom as a backup of Josh Butler. So we filled all the overseas slot really well. Tom was backup of Josh, Donovan for Hattie, someone like Hattie. We have Roman Powell to finish the innings, and we have Nandre Berger as a backup of Trent Bolt. So we have our backup fixed. So if we had bought Rutherford, he would have played at 6, like he did in PSL. And we already have too many players to fixing. Even we are talking about Shubham Dubey, so it would have been tough to fit him. So it was a right call, and also budget was the problem. Rightly said, we got, I think, cheapest foreign player, because Tom was not an capped player. So it was really a smart call at the auction table. Absolutely. And yeah, I think that's pretty much it for today. I think March 22 is when you'll see our players in action. For now, you just have to deal with us, I suppose. And especially in the upcoming week, we have the Dharmasala test match. So there's a lot of cricket that's ready for you. And sure enough, we would be there in the next weekend as well for another episode of the Royals on the Road. A special thanks to all of you guys who've sent your comments during the podcast. Don't forget to like and share this video, and if you haven't already, please do subscribe to our channel, follow us on our Instagram social media handles, and don't miss out on any interesting content and the amazing contests that we constantly bring to you. Now that the IPL is coming closer, stay tuned for more engaging contests and competitions that we'll have. That's it from my side. Here's Super Royal Upayan signing off. Everyone, hopefully you guys have a great weekend. Thank you so much, Jaydeep. Thank you so much, Nikunj, for joining with us. And let's hope that our men in blue get some more points for the World Test Championship before finally heading on to the uh, Indian Premier League. Happy weekend and Halla Bol. Hello.
Done?